Hello, kids. We are starting a new book, We and Our Society, a textbook of Social Science 1. Chapter 1, Self Introduction. Learning objectives, introducing myself and my identity card. Okay? Then warm up experiential learning. Tick the things that you like in the given picture. तो ये पूरी पिक्चर गिवन है हमें, इसमें जो हमें चीज़ें पसंद हैं उन पर हमें टिक करना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ जाइंट व्हील, 2 giant wheel, so I like this, I'll tick on this one. Then there is another ride which I like, so I'll tick on this one. Similarly, you can tick on the things that you like. Okay? Now, introducing myself. Introducing myself means telling someone about me. See how 2 children introducing themselves. So, यहाँ पर introducing myself का क्या मतलब होता है? यानी कि हम किसी person को अपने बारे में describe कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं. Okay? जैसे यहाँ 2 चाइल्ड है, वो खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, सो दीज आर दी 2 चाइल्ड्स. ओके, सो दिस गर्ल इज सेइंग माय नेम इज परी, आई एम 6 years old, आई लाइक प्लेइंग विद माय टॉयज. उसने बोला मेरा नाम परी है, मैं 6 years old हूँ. ओके, एंड मुझे अपने टॉयज के साथ खेलना पसंद है. देन दिस बॉय इज सेइंग अबाउट हिमसेल्फ, माय नेम इज नित्यम, आई एम 6 years old, आई लिव एट जयनगर, आई लाइक पेंटिंग विद माय ब्रशेस. फिर इस बॉय ने भी अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, अपना नेम बताया कि मेरा नाम नित्यम है, मैं 6 years old हूँ, मैं जयनगर में रहता हूँ, एंड मुझे अपने ब्रशेस के साथ पेंट करना पसंद है. ओके, दिस इज कॉल्ड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ टू समवन एल्स. ओके, देन नाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. You need to write your name, class, and whatever they are asking in this. Okay, your name is dash. You need to write your name. So, for example, I'll write here Kriti. You are dash years old. Now you need to write your age. For example, I'll just write here 7. You like dash. You need to write here what you like what the things you do in your leisure time. So, you like to read books. Okay. Then, you live in dash with your family. Now here you need to write the name of the place where you live with your family members. So for example, I'll just write here Gurugram. Okay. Done. Now next thing is my identity card. Pihu and Nityam have special cards with them. Anyone can know about them by reading the cards. Pihu और नित्यम, उनके पास एक स्पेशल कार्ड्स हैं एंड उनको पढ़कर कोई भी उनके बारे में जान सकता है. ओके, डू यू नो व्हाट इज दिस कार्ड कॉल्ड? डू यू हैव सच अ कार्ड? दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी कार्ड. It is also called an ID card. All students of the school wear this card. You can also make your own identity card. तो क्या आपको पता है इस कार्ड को हम क्या कहते हैं?
इस कार्ड को हम कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड. इन शॉर्ट वी कॉल देम एज आईडी कार्ड एज वेल. ओके, जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के वो ये कार्ड को वेयर करते हैं. एंड आप भी अपने लिए ऐसा आईडी कार्ड मेक कर सकते हैं. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ ID card. Here you can see first they have written the name of the school, DAV Public School. Then the address of the school, Sector 11, Rohini, Delhi, and the phone number of the school. Then this is for the session. Okay. Then name of that student and the picture as well given. Okay. Father's name of that student, mother's name. Then class is also written here. Phone number of the particular student, DOB, date of birth means it is also there. Then address is also given. Okay, and email is also given for this student. And here is the stamp and the signature of principal are there, but this is just an example, so there is not the sign of principal. Okay, this is ID card looks alike. Okay, my likes and dislikes. We like to do something very much. This is one of our likes. We all have some favorite foods to eat, some favorite dress to wear and some favorite things to do. तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत करना पसंद होती है, जो हमारी लाइक्स होती है, जो हमें करना पसंद है उनको हम लाइक्स कहते हैं. एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी फेवरेट होती है, फूड जो हम खाना खाते हैं, या कोई ड्रेस होती है जो हम वेयर करते हैं, फेवरेट थिंग्स होती है जो हमें करना पसंद होती है. लाइक्स एंड फेवरेट इज द सेम थिंग. ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं. दीपिका लाइक्स टू सिंग. दीपिका को गाना पसंद है. देन आर्यन लाइक्स टू फ्लाई काइट. आर्यन को पतंग उड़ाना पसंद है. देन लोकांश लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स. लोकांश को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है. ओके, देन नेक्स्ट इज रीशफल मेंटल डेवलपमेंट. रीअरेंज द लेटर्स टू गेट मीनिंगफुल वर्ड्स. इनको हमें रीअरेंज करना है ताकि हमें एक प्रॉपर करेक्ट वर्ड मिले. सो फर्स्ट LAPY. The correct word is play. Then second NGIS. Correct word is sing. Then third WRGA. The correct word is draw. Then fourth EDRA. The correct word is read. Then fifth NCEDA. The word is dance. Then sixth LYF. The word is fly. Okay, we are done with this. Then there are some more examples given. Rahul likes to play football. Satakshi likes to draw pictures. And Neha likes to dance. So these are the things these children like. Okay, or their favorite things. Okay. But sometimes you do not like to do something. For example, somebody does not like to eat spicy food. A bad dream also makes you sad. These are called your dislikes. So कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको करना पसंद नहीं होती. जैसे एग्जाम्पल दिया है, कुछ लोगों को स्पाइसी फूड खाना नहीं पसंद होता. और एक बैड ड्रीम होता है. बैड ड्रीम हमारे मूड को सैड कर देता है. तो जो चीज हमें नहीं पसंद होती उनको हम कहते हैं डिसलाइक्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट से अ सेंटेंस. I dislike
to eat spicy food. Okay? Then critical thinking time to do. Just like Pari and Nityam, we all like some things more than other. These are called your favorites. What do you like to do? तो जैसे परी एंड नित्यम ने बताया उन्हें कुछ चीजें करना पसंद है, इसी तरीके से हम लोगों को भी कुछ कुछ चीजें करना पसंद होता है, यानी कि हमारे फेवरेट्स होते हैं, राइट? तो हमें क्या करना पसंद है? वी हैव टू राइट हियर, ओके? So you love to play dash. Here you need to write the name of the sport or any other thing you like to play. So I'll just write here football. You also love to dash. Here you need to write another thing that you like to do in your leisure time. So I'll just write here, for example, cook. Then next is your favorite food is dash. Here you need to write the dish you like the most. So, for example, I'll just write here pasta. Then next, your favorite color is dash. Here you need to write the favorite color of yours. For example, I'll just write here blue. Then next, valued facts. Each one of you is special or unique because you are different from others. हम सब लोग यूनिक है क्योंकि हम एक दूसरे से डिफरेंट है. सबके फेशियल फीचर्स, सबका बिहेवियर, सब कुछ चीज़ें अलग होती है. सबके मदर फादर अलग है, सबके डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, बट मेजरली चीज़ें देखें तो सब अलग होते हैं. सबके लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट होते हैं, राइट? देन नेक्स्ट, फैक्ट फाइल. The activities you like to do in your free time are called your hobbies. जो काम आपको अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में करने में अच्छा लगता है, ऐसी एक्टिविटीज, उनको हम बोलते हैं हॉबीज. ओके? देन नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड, अ कार्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन. आइडेंटिटी कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस पर्सन से रिलेटेड, जिसका वो होता है. ओके? देन नेक्स्ट, फेवरेट, समथिंग दैट यू लाइक. फेवरेट मीन जो आपको पसंद हो. ओके? देन नेक्स्ट, डिसलाइक, समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक. डिसलाइक यानी कि जो आपको पसंद नहीं है. ओके? Then next, developing recalling skills. Let's recall. Introducing myself means telling someone about me. Introducing myself का मतलब क्या होता है? किसी को अपने बारे में बताना, introduce करना. An identity card has important information about a person. Identity card में important information दी होती है उस particular person के बारे में. Every person has likes and dislikes. सब person के likes and dislikes होते हैं. Okay? Then problem solving exercise. A, make a smiley for the action you like and sad face for the action you dislike. So, जो चीज़ें हमें पसंद है उनके लिए हमें स्माइली फेस मेक करना है, एंड जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है करना उसके लिए सैड फेस बनाना है. ओके? सो फर्स्ट, प्लेइंग स्नेक एंड लैडर. सो आई लाइक दिस वन पर्सनली. ओके, सो आई विल जस्ट मेक अ स्माइली फेस. इफ यू डोंट लाइक दिस यू कैन मेक अ सैड फेस. ओके? Then second, flying kites. So personally, I don't like to fly kites, so I'll just make a sad face. If you like it, you can make smiley. Okay?
Then third, drawing pictures. I don't like to draw pictures. If you like to draw pictures, you can make a smiley. But for now, I'll just make a sad face, okay? Then fourth, making noise in class. This you don't need to do. So I'll just make a sad face, okay? Then fifth, feeding pets. This is a good thing. So I'll just make smiley face here. Then sixth, fighting with friends. You should not do this. So I'll just make sad face. Then seventh, watching TV. This is a thing you can do or you can like. So I'll just make a smiley face. Then eighth, playing music in loud sound. This you don't need to do because you might disturb everyone else in your house, okay? So I'll just make a sad face. Then 9, singing and dancing. So I'll just make a smiley face here because everyone likes to sing and dance. Then B, complete the sentences. First, your favorite cartoon is dash. Here you need to write the name of your favorite cartoon. So for example, I'll just write here Pokemon, okay? Then second, your favorite flower is dash. You just need to write here the name of your favorite flower. I'll just write here jasmine. You can write any other, okay? Then third, your favorite color is dash. So here you need to write your favorite color. I'll just write here black. Then fourth, your favorite sport is dash. Here you need to write the name of your favorite sport. For example, I'll just write here cricket. Then fifth, your favorite language is dash. Here you need to write your favorite language. So I'll just write here Hindi. Then C, answer the following questions. First, what is your name? Here you need to write your name. You can write it by yourself. Then second, what is your father's name? Here you need to write your father's name. You can write it by yourself. Then third, what is your mother's name? Here you need to write the name of your mother. You can write it by yourself. Then fourth, where do you live? Here you need to write the name of the place where you live. If you don't know, you can ask about it from your parents, okay? And then you can write it here by yourself. Then fifth, in which class do you study? You all study in first class. So I'll just write here first. Okay? Done? Higher order thinking skill. What will you do when your friend has lost his or her pencil and needs one from you in the class? अगर आपके फ्रेंड की पेंसिल लॉस्ट हो गई है तो आप क्या करोगे? उसे पेंसिल दोगे या नहीं दोगे? उसे पेंसिल की नीड है. सो यू शुड हेल्प हिम और हर by borrowing him or her the pencil. Okay? You should always help the needy ones. Okay? Then creative learning, creative skill, fill in the blanks to tell about yourself.
Here you need to fill the blanks. Here you need to write the name of your school and the address of your school. Okay, for example, I'll just write here DPS. Okay, DPS, and here you need to write the address. Okay, and then here you need to write your name, then father's name, mother's name, then class in which you study, and the phone number of yours, means your parents' phone number, then your DOB means date of birth, and then address of yours, and then your email ID. Okay, and you have to paste your picture here. This you need to do by yourself. Okay, then life skills, intellectual development. You should follow your parents and teachers. This helps in making your identity good. हमें हमेशा अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की हेल्प करनी चाहिए. इससे जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो अच्छी बनेगी. ओके, so I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.